Good morning, students. I am Vipul Chauhan. Today's session about describe the niche tourism. आज हम निशी टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है और ये भारत में कहाँ कहाँ प्रेफर किया जाता है. Niche tourism. Niche tourism introduce how a specific tourism aspect can be tailored to meet the needs of a market segment which is interested in something particular or distinct. Importance of niche tourism India. ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट देश की बहुत ज़्यादा होती है. इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ द ब्यूटी एंड रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ आवर नेशन. इट प्रमोट्स इंटर रिलीजनल रिलेशनशिप. Tourism encourages culture pursuits and provides supports to local handicrafts. Benefits of niche tourism. A national tourism strategy is the government policy that encourages tourism that brings benefits to the country. Niche tourism is often promoted by national tourism strategies because it is seen as a more sustainable way of developing tourism. They are relatively low number of tourists. They are genuinely interested in seeing the destination as it is, rather than demanding changes to it such as more hotel facilities. और हमें वो एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हैं कि हम उन्हें अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट दिखाए, अच्छे से अच्छी प्लेस विजिट कराए इंडिया में. रिस्क ऑफ निशी टूरिज्म. अगर किसी के मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं. However, niche tourism must be carefully chosen. This is because of several negative factors, such as they are relatively few tourists, so it is unlikely to be scaled up as a huge growth industry. Niche tourism is susceptible to shock events. For example, if terrorism begins to affect people visiting religious buildings, those tourists might not travel, which means the whole tourist industry is in at risk. Niche tourism often attracts people from a very specific demographic who states many changes too quickly for the destination to adapt. For example, a TV set location may be popularly only as long as the TV show is on the air, after which tourism may decline. Another point, because of the relatively small number of tourists, a destination may suddenly lose its customers because of competition. For example, an island might have an tourist, but then an island in the new location improves its tourist infrastructure and people choose to go elsewhere. Now we studied about पार्ट्स ऑफ निशी टूरिज्म. फर्स्ट, एग्रो टूरिज्म. इसे हम फार्म बेस्ड टूरिज्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्रूट पिकिंग आता है. एग्री टूरिज्म, एको, एग्रो टूरिज्म और फार्म बेस्ड टूरिज्म involves the activities such as fruit picking. Tourists may go on tours of working farms or on established tourist routes such as brandy or wine routes. They may visit the processed farm produce, for example jam, and may stay overnight in farmhouse B and BS. Another part of this, adventure tourism. आप सबको एडवेंचर करना पसंद होगा. आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ होता है. मोस्टली पहाड़ों में ही होगा, लाइक हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर. Adventure tourism. Adventure tourism. Adventure travel is a type of tourism involving exploration or travel with perceived and possibly actual risks at potential requiring specialized skills and physical exertion. Adventure tourism is rapidly growing in popularity as tourists seek different kinds of vacations. अब इसमें आ जाता है ट्रैकिंग. Trekking is a long and adventure journey, taking on foot in many trekking areas like Churdhar, Gaba, and nearby places.
It is one of the most exciting and affordable adventure activity in हिमाचल प्रदेश. जैसा कि मैंने कहा था, two types of adventure you can see. Another part of this, art tourism. Art tourism is a term that is used when people travel in order to visit, explore, and engage in activities related to arts. It includes traveling to art festivals, art galleries, music competitions, and dance and book festivals, and to explore the homes of famous artists, musicians, writers, and poets. Culture tourism. Culture tourism, this kind of tourism normally occurs in urban areas with particular historical significance of culture facilities such as museum and theaters. Culture tourism also highlight the various tradition of indigenous communities through observing their rituals, customs as well as their values and lifestyle. Tourism, therefore, serves as the carrier of culture, and culture tourism has become the platform for culture consumption. अब इंडिया में बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी कल्चर, पंजाब में पंजाबी कल्चर. इस तरह से आपको बहुत कल्चर्स मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में. इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर टूरिज्म. कल्चर टूरिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन्स. इसका जो प्रभाव है एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट है इसका. इट एस्टेब्लिश्ड एंड रीइंफोर्स्ड आइडेंटिटी. ये हमारे देश की इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है. इट हेल्प्स प्रिजर्व द कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज. With culture as an instrument, it facilitates harmony and understanding among people. It supports culture. Environmental tourism. आप सभी जानते हैं इन्वायरमेंट हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है. हम अपने आसपास देखते हैं इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे, ये सब इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंटल टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म. Environmental tourism also referred to as ecotourism, sustainable tourism, and responsible tourism are terms wrote in the concept of development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Luxury tourism. लग्जरी का मीम आराम से रहना, बहुत ही कंफर्टेबल. दिस मीन्स लग्जरी. Luxury tourism, according to Statistica, luxury tourism as a niche market is defined as revenues derived by a destination from of consumer goods, services, and valuables for a during trips by individual tourists who have net assets of over 1 million US dollar. मतलब इसे ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं. असेसेबल टूरिज्म. असेसेबल टूरिज्म इज टूरिज्म फॉर ऑल. मतलब ये टूरिज्म सब लोगों के लिए है, रिच, ओल्ड, पुअर. इट्स अबाउट मेकिंग ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी मोर रीचेबल एंड pleasurable for travelers with universal access requirements. Is also about sensitizing yourself to the language of disability. Accessible tourism includes disability, funds, senior citizens, food intolerance. मूवी लोकेशन टूरिज्म. मूवी लोकेशन टूरिज्म वो होता है जहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर्स शूट की जाती है. जैसे आप अपना ताजमहल ले लीजिए इंडिया में, यहाँ पे भी बहुत सी मूवीज़ शूट की जाती है. खासकर सबसे मूवी लोकेशन का सबसे अच्छी जगह इंडिया में राजस्थान है. मूवी लोकेशन टूरिज्म. While many people would be happy to visit a place, use the location for a movie set, few people making it the main source of focus holiday.
Example of places that have a specialized focus are Salzburg, the location of the Sound of Music, and the New Zealand location for the Lords of the Rings trilogy. Rough Guide 2017. The principle also extends to TV set tourism such as Game of Thrones sets in Spain, Northern Ireland, and Croatia. हेरिटेज टूरिज्म, हेरिटेज मतलब रियासतें, जैसे कि पहले ज़माने में होती थी, जो राजाओं के पास होती थी वो उस पे राज करते थे। आज हम इससे यहाँ पढ़ेंगे। हेरिटेज टूरिज्म आपके जैसे सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी हेरिटेज टूरिज्म में ही इंक्लूड होते हैं। हेरिटेज टूरिज्म मोस्टली फोकस्ड ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर. This type of tourism is increasingly popular but remains relatively small scale compared to the mass tourism of beach holidays. Examples of the location that market themselves for heritage tourism includes many Italian cities such as Venice, an example of a tourism hotspot, the Beijing in China, and the Great Wall of China and the Machu Picchu in Peru is the very famous wonders of the world. Volunteerism. Volunteerism, voluntary travel or volunteering. Volunteerism is a form of tourism in which travelers participate in voluntary work, typically for a charity or cause. A good example of volunteer programs in the wildlife conservation spaces Aisha Cheetah Sanctuary. Their reciting of Benjamin Franklin's famous quote, "Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand." वाइन टूरिज्म, वाइन टूरिज्म ये आप अभी लॉकडाउन के बाद जब वाइन शॉप्स खोली गई थी तो इंडिया में काफ़ी वाइन्स बिकी थी उस टाइम, इसीलिए ये भी इसमें शामिल है। वाइन टूरिज्म, टूरिस्ट विजिट्स वाइन ग्रोइंग रीजन्स एंड वाइन रूट्स, wine festival, and so on, for the purpose of consuming or purchasing wine. South Africa has an excellent wine regions and offers a variety of additional benefits to wine tourists, including natural and culture visitor attractions. The country wine's routes are ranked as the fourth most popular visitors attraction for international and domestic tourists. गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड टूरिज्म के बारे में जाना जाता है। हम में ऐसे कई लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा जहाँ फूड अच्छा मिलता है वहाँ पे विज़िट करना प्रेफर करते हैं। गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म और फूड टूरिज्म, foodies visit a destination in order to experience cuisine and food festival. Gastronomy tourism is defined as travelers that has food as the primary factor or influence in travel behavior and the decreasing making process. Thank you, made by Vipul Chauhan.